ही विज्ञान का विस्तार है, विज्ञान से ही हो रहा नर नारी का कल्याण है। आज इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में सम्मिलित सभी सम्मानित सर गुड मॉर्निंग। शिक्षकों, प्राचार्यों, वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, डीएवी कॉलेज प्रबंध तंत्र के मार्गदर्शक, हमारे सम्मानित प्रेरणा स्रोत एवं पूरे अखंड भारत के ऊर्जावान प्यारे छात्रों छात्राओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं वंदन। मैं डॉक्टर स्वप्निल राज दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान विभाग, डीएवी कॉलेज कानपुर, आज इस ऐतिहासिक पावन दिवस पर कार्यक्रम संचालन का दायित्व संभाल रहा हूँ। यह मेरे लिए एक गर्व का विषय है। डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप स्मृति लेक्चर सीरीज के माध्यम से डीएवी कॉलेज कानपुर और इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के तत्वाधान में इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन विज्ञान दिवस साइंस डे के गौरव में रखा गया है। अतः आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। महानुभावों, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के समय अपनी माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। हमें हर पल ऊर्जा देने वाली माँ सरस्वती का अब हम वंदन करना चाहिए। सर कोई प्रॉब्लम आए तो सर बताइए। He's here. Yes. To help me. हट जाएंगे खड़े। वेबिनार हो रहा है, उसके बाद माता को सादर प्रणाम। अब मैं अपने महाविद्यालय के समर्पित पूर्व ऊर्जित ऊर्जावान अथक अदम्य साहस से भरे प्राचार्य माननीय प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी, जो महाविद्यालय के गौरव को उच्चतम शिखर पर स्थापित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह हमारे अतिथियों का स्वागत एवं सत्कार करें। आदरणीय प्राचार्य। Thank you, Swapnil ji. As the principal of this Heritage College, I truly feel honored to welcome you all to this virtual celebration of National Science Day, which is being formalized as the component of Dr. Nagen Swarup Memorial Lecture Series under the aegis of Indian Science Congress Association, Kanpur chapter. I am feeling overwhelmed by the gracious presence of great luminaries from the field of academics on this auspicious occasion. I convey my warm greetings to our Secretary, Board of Management, Srimati Kumkum Swarup ji, who is presiding over this virtual event. My greetings to the chief guest of the occasion, Professor H.S. Singh, Vice Chancellor of Ma Shakumbari University, Saharanpur. I express my warm greetings to Dr. Vijay Lakshmi Saxena, General President, ISCA. My sincere greetings to young and dynamic engineer Gaurav Swarup ji, who is Joint Secretary of the Board Management of this college.
and also the Executive Council member of ISCA Kanpur chapter. I express my gratitude and greetings to other respectable dignitaries who are gracing this occasion, like Dr. Ashok Saxena, convener, ISCA Kanpur chapter, and Dr. Sudhir Srivastav, treasurer, ISCA Kanpur chapter. I wish all the best to the organizers and the participants. The topic, Ancient India's Contributions to the World of Science and Technology, inspires a great sense of pride and belongingness when one recalls and ponders over the humongous contribution that India has made to the world of science. India has been the torchbearer to the world not only for cultural awakening, but for fundamental contributions in the field of science and technology as well. There is no field of science where India has not left its deep imprints. The whole world owes a great deal to this spectacular nation for its scientific enlightenment, without which modern day science will collapse and crumble, and we all shall descend down to the abyss of ignorance. If I'm asked to single out the most significant and thrilling imprint that ancient India has left, then attention spontaneously falls on concept of zero and decimal system. Visualize a world without them, and you shall have an endless realm of darkness. The humbling heights of India's imprints in the field of science are too aplenty to be recounted within a circumscribed limits of time, but few more of the diverse fields like medical science, metallurgy, astronomy, yogic science, metrics, material science, mathematics, linguistics, etc. could be justified. Voluminous works of Shushruta and Charak are still reckoned by scholars of medical science as cornucopic treatises and are widely read and referred for insightful knowledge. Some of the metallurgical novelties of ancient India are still enigmatic for modern day metallurgists. In the field of astronomy, ancient Indian knowledge presents a picture of great bewilderment. Ancient Indian astronomers had a very strong insight and had measured not only distance of sun from earth, but also later circumference. Concept of pi and its value was instrumental in all such calculations. Our seers from ancient times had a clear conceptualization of our solar system as heliocentric and could calculate date and time of eclipses with immaculable accuracy. The list of achievements is very large, and I will rest here for our knowledgeable resource persons to throw light upon India's scientific legacy. I wish you all a very engaging and enlightening session. Thank you all for being a patient audience to my views. Jai Hind, Jai Bharat. Over to you, Swapnil. Thank you so much, sir, for your Thank you, Principal Sir. Thank you. valuable. Thank you so much, sir, for your valuable words and kind support. प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हृदय में प्यार है। प्रकृति के प्रति मन में सम्मान और हृदय में प्यार है, तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। तो विज्ञान पूरी मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है। इन्हीं के साथ अब मैं अपने सहयोगी मित्र डॉक्टर पंकज वर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि वह हमारे बीच उपस्थित इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की जनरल प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर पंकज वर्मा जी। Okay, thank you, Dr. Swapnil. I feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to introduce Dr. Vijay Lakshmi Saxena. She has been named the General President of Indian Science Congress Association 2019 to 22.
With this honor, she becomes the second woman in Indian Science Congress's 107-year history to hold this prestigious post. Dr. Saxena has research experience of 46 years and teaching experience of 40 years. 32 students have obtained PhD degree under her excellent guidance. She has published 104 research papers, 10 review articles in reputed national and international journals, and also edited more than 20 books. She is a member of several professional bodies. We are very grateful, and it is an honorable moment for all of us to have your prestigious presence in the today's event. We all are truly inspired by your scientific contribution. I hereby request you, ma'am, kindly express your views. Over to ma'am, Saxena ma'am. Thank you very much for your kind words. A very good morning to all attending Dr. Nagen Swarup Memorial National Webinar 2020 and also celebrating Science Day at DAV College, Kanpur. Honorable Mrs. Kumkum Swarup, President of the session, respected Professor H.S. Singh, Vice Chancellor, Ma Shakumbri University, Saharanpur, Chief Guest, Professor A.T. Dikshit, Principal, DAV College, Kanpur, Dr. S.P. Srivastava, Treasurer, Indian Science Congress Association, Kanpur Chapter, and Dean, Faculty of Science, CSGM University, Kanpur, Dr. Swapnil Raj Dubey, Coordinator, DAV College, Kanpur, all the participants of online and online Science Day program, guest speakers, organizing committee members, faculty members, my beloved student fraternity, media personals, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere thanks and gratitude to Dr. S.K. Srivastava, Treasurer, ISKA Kanpur Chapter and Dean, Faculty of Science, CSGM University, Kanpur, for inviting me on this special occasion. It is indeed a great honor that I've been granted the opportunity to express my views on Science Day, and I'm happy to be a part of it. My sincere gratitude to Mrs. Kumkum Swarup, President of the session, for kindly sending her message, and due to some unavoidable circumstances, she is unable to attend. I am grateful to Madam. In the beginning of my talk, I would like to salute Professor C.V. Raman, for which today we are celebrating Science Day. The most eminent and outstanding Indian scientist, Dr. Chandrasekhar Venkat Raman, famously known as Sir C.V. Raman, established his experimental thesis known as Raman effect, which was declared officially on 28th February in 1928. Due to his discovery of the Raman effect, he was honored and awarded the world-famous Nobel Prize in 1930 in physics, and he was the first Asian to receive this award. He also received first Bharat Ratna Award in 1954 and was also honored with the greatest award of Russia-Lenin Peace in the year 1956. In 1987, on February 28, the first National Science Day was observed countrywide to commemorate the important contribution of science, scientists, and scientific progressions in our life. All programs and activities revolve around a focal theme selected every year. This year, the focal theme of Science Day is Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future, which was launched by Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister for Science and Technology, on 5th January 2022. On this day, the nation pays tribute and expresses its gratitude to all the scientists who have made a dream of using the science and scientific discoveries as vehicle for economic development a reality. Celebration of science will attract many young children to take up as science as a career. This is the day a scientist may like to rededicate themselves to create
high quality scientific research output from India and make the nation proud. I have been asked to recount the story of India's glory in the realm of science and technology, which is without doubt breathtakingly awe-inspiring. Our seers and sages from ancient times have made contributions to the field of fundamental science in the foundation of which entire edifice of modern scientific literature can be seen as resting. There is no field of science where ancient India has not left its imprints, be it astronomy, mathematics, physics, chemistry, medical science, metallurgy, environment, yogic science, or whatnot. Ancient India did have acute insight into almost every field, which is still relevant to modern fields of scientific study and research. India's cultural history spans a magnificent period of about 6,000 years when whole world hasn't seen the light of civilization. India stood as the insular oasis of a culturally advanced society which had the rhyme and resonance of its own kind. Our cultural magnificence was carried to Western and all over the world by traders and travelers. Now the whole world owes a great deal to India for the light of knowledge and cultural awakening it acquired. As also said by Dr. Dikshit, principal of the college, introduction of decimal system and zero to the field of mathematics is recognized world over as the most significant contribution to the number system, without which entire edifice of modern science and technology shall crumble. Conceptualization of heliocentric solar system, when rest of the world hailed to be geocentric, and concept of planetary motions, eclipse, and algorithms of exact calculation of time and date of their incidence is unthinkable for that period at a time when heavy gadgets and tools are put to use today for the sake. Yoga sciences and importance of hygiene for healthy life is not unknown to anyone. It has become a cult or over to practice yoga for healthy living. Today, yoga is appreciated as truly a functional science with intricate physiological links. Another very significant area where contributions of India to science is indelibly linked to medical science, namely like Charak and Shutrut, will still resonate among medical fraternity for the immense contribution in the medical field. The voluminous treatises on Ayurveda and surgery produced by them are yet reckoned as standard works in the field. The vast repertoire of Ayurvedic knowledge, which is surviving among traditional societies, can be put to welfare of mankind without any adverse side effect. Ayurveda has started gaining due recognition after the decline of allopathy due to associated side effects it entails. Science of metallurgy had touched pinnacle in ancient India when variety of alloys were produced to meet various needs. Ashoka's iron pillar in Qutub complex near Mehrauli, Delhi is the testimony to ancient India's metallurgical skills. The pillar is put outdoors and it hasn't rusted yet, which is a conundrum for even modern day metallurgists. Even in maritime trade and navigation, ancient India hasn't any parallel elsewhere in the world. Dockyards of Harappan period are still recognized for their architectural design and their utilitarian value. The list is very long and those mentioned are only illustrative. India stands out in the world as the insular country
with such phenomenal achievements in science and technology during ancient times. Even in modern times, Indian contribution to science is stupendous. Some names of modern scientists who have left big impact can't miss my conscious note. Sir J.C. Bose for his work on wireless communication, Dr. C.V. Raman for his Raman effect, which earned him Nobel Prize, Dr. C. Chandrasekhar, Dr. Har Gobind Singh Khurana, etc. are some rolling names among modern scientists from India. It is a matter of great pride for we Indians to acknowledge our scientific legacy and come out of Machiavellian mindset of viewing our greatness in dim light. We are the carriers of this great legacy and we must spread it to the rest of the world to earn due recognition of our country for its exalted legacy. Our scientists and technologists have placed us at the forefront of the world in certain areas. India is designing, developing, and launching world-class communication and remote sensing satellites. These communication satellites have brought out a sea change in our communication network. Now, one can communicate from anywhere to anywhere at any point of time. Even from the remotest village of the country, one can communicate to any place in the world. Day in and day out, we are enjoying TV broadcasts, the comfort of mobile communications, data connectivity, and internet through the satellite that we have launched. Indian biotech companies have captured the vaccine field within a very short time. About 45% of the entire children's vaccine of the world are now made and distributed by Indian biotech companies. Now, India is the vaccine factory for the world. 30 to 40 years back, India was a beggar for vaccines. And today, India is a proud donor of vaccines. We are donating different types of vaccine to more than 100 countries. The government of India emphasizes that education plays a pivotal role in human resource development and nation's economy. Thus, the National Education Policy, NEP 2020, lays the foundation for new India of the 21st century. India of the next 25 years will be very different from what it is now. Hence, the student knowledge base must be flexible to cope with the 21st century jobs. The National Education Policy 2020 will make India a knowledge superpower. I wish all the students and research scholars a great success through a long journey of aspiration, hard work, commitment, focus, hope, and confidence. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vigyan. Thank you, one and all. बहुत धन्यवाद मैडम, आपके आशीर्वचन, आपके कहे एक एक शब्द हमारे रोम को रोमांचित कर रहे हैं और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा के भाव उत्पन्न कर रहे हैं। हमारा स्वच्छ और निर्मल उद्देश्य यह है कि हम प्रत्येक वर्ष ऐसे ही इस महापर्व को मिलकर बनाएं और विज्ञान का विस्तार सुनिश्चित करें। आज ही के दिन सन 1930 को हमारे देश के शीर्ष एवं दिग्गज भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को प्रकाश से संबंधित अपनी खोज रमन इफेक्ट के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह हम सभी के लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है। अब मैं इस अवसर पर सेशन की अध्यक्षता कर रही इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की काउंसिल मेंबर एवं सचिव प्रबंध समिति डीएवी कॉलेज को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप हमेशा की तरह हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करें। आदरणीय अध्यक्षा महोदय।
स्वप्निल जी उनका मैसेज पढ़ेंगे। किसी विषम परिस्थितियों की वजह से आप हमारे समक्ष नहीं आ सके, परंतु आपका संदेश हमें प्राप्त हुआ है। उनके संदेश को हम सुनना चाहेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान। विज्ञान हमें किसी विषय का सही अवलोकन, विश्लेषण एवं वास्तविक जानकारी ग्रहण करना सिखाता है। भारत में विज्ञान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विज्ञान के समग्र विकास की यात्रा में भारतीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। पुष्पक विमान सिर्फ एक झलक है। भारतीय नौका का उपयोग करके वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था एवं हमारा भारतीय धातु शास्त्र इतना उन्नत था कि सैकड़ों सालों तक धातुओं में जंग ही नहीं लगती थी। हमें भौतिकी और रासायनिकी का इतना ज्ञान था कि किसी साधारण धातु से भी सोना बनाया जा सकता था। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। विज्ञान के विकास में भारतीय महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जीवन के हर उत्पादक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, नैनो तकनीक, परमाणु अनुसंधान, पर्यावरण विज्ञान तथा अनेक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने अपनी पहचान छोड़ रखी है। अपने सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते महिलाओं का विज्ञान की दुनिया में मुकाम हासिल करना कभी आसान नहीं रहा। कुछ दशक पहले महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन वहीं 20वीं सदी की कुछ महिलाओं ने चुनौतियों को पीछे छोड़कर विज्ञान का दामन थामा और ऐसी छवि बनाई जिसे आज भी दुनिया याद करती है। आज उन महिला वैज्ञानिकों का स्मरण करना आवश्यक है। अन्ना मणि जी, असीमा चटर्जी जी, कमल रणदिवे जी, जानकी अम्माल जी, कमला सोहोनी जी, आनंदी गोपाल राव जोशी जी, डॉक्टर दर्शन रंगनाथन जी, इन सब का योगदान भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से रहा है। भारत की पहली महिला फिजिशियन आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जी थी। अन्ना मणि जी उच्च कोटि की भौतिक शास्त्री एवं मौसम वैज्ञानिक थी, जिन्होंने प्रोफेसर सीवी रामन जी के साथ मिलकर काम किया। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक असीमा चटर्जी जी, जिन्होंने अपने शोध के अनुसार मिर्गी और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए कारगर औषधियां बनाई, जिसके लिए उन्हें सीवी रामन पुरस्कार के साथ साथ पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही हमारी भारतीय महिला वैज्ञानिक के जानकी अम्माल, जो कि एक पादप वैज्ञानिक थी, ने गन्ने की एक मीठी किस्म को विकसित किया। साथ ही हमारे भारत के दिग्गज वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन जी की पहली महिला वैज्ञानिक छात्रा कमला चौहान जी थी, जिन्होंने पौधे में साइटोक्रोम सी नामक एंजाइम का पता लगाया, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। ऐसी अनेक भारतीय महिला वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी से आग्रह करती हूं कि आज विज्ञान दिवस के अवसर पर आप
खासकर बच्चे विज्ञान को पढ़ें, जानें और इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। साथ ही आप सभी लोग भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था से जुड़कर विज्ञान का विस्तार एवं प्रसार सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार मैडम। अब हम अपनी यादों को ताजा करते हुए स्मृति से स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र स्वरूप जी को नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने डीएवी संस्थान को एक उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। आपका स्नेह, आपका प्यार सदैव हमारे साथ बना रहे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपके आगे वचन हमें हमेशा ऊर्जा देते रहेंगे। आदरणीय रमन सर was the first Asian and first non-white person to receive a Nobel Prize in the field of science. With the help of Raman spectroscopy, he analyzed the materials like gases, liquids, and solids. In 1970, he collapsed in his laboratory. He moved to a hospital and the doctor gave him 4 hours to life. He survived and after a few days refused to stay in the hospital and preferred to die in the garden of his institute, that is Raman Institute, Bangalore, surrounded by his flowers. ऐसे महान वैज्ञानिक और प्रसिद्ध सैनिक रमन सर को हमारे श्रद्धा सुमन। अब वह फिर प्रशिक्षित पल जो सुनने के लिए आपने खैर का परिचय किया। आज के आयोजन की शोभा इनकी गरिमामयी उपस्थिति इस दरमियान की सार्थकता से आज के हमारे अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती ये भारत धरा, अतिथि देवो भव कहती ये भारत धरा, स्वागत करके आपका भारत, स्वागत करके आपका भारत। हृदय की अंतरतम गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे निमंत्रण को आपने सहज स्वीकार कर लिया और वेबिनार में सम्मिलित होने की सहमति जताई। आप सहजता सरलता के साथ साथ आपका बहुत बहुत आभार। आपकी शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध लखनऊ विश्वविद्यालय से रही। आपने जंतु विज्ञान विषय के पैरासिटोलॉजी एमएससी की उपाधि हासिल की। तत्पश्चात अपना शोध कार्य पैरासिटोलॉजी की शिक्षकता के साथ संपूर्ण किया। आप मौजूदा समय में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है कि कुलपति के रूप में सेवा दे रहे। आपको 42 वर्षों का शोध कार्य के अनुभव एवं 39 वर्षों का अध्यापन अनुभव प्राप्त है। आपके 244 रिसर्च पब्लिकेशन ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा की गई विभिन्न पुस्तकें हमारे स्नातक, परास्नातक एवं शोधार्थी छात्र उपयोग कर
जाकर विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य जगहों पर लगभग 11 फंडिंग आप विश्वविद्यालयों आगे आए एवं आपके साथ आए। आपको शिक्षक आप चौथी चरण के विश्वविद्यालय मेरठ में ICSE के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, टीचर, तीन सदस्यीय औपचारिक परीक्षा नियंत्रक रहे। आपको समय समय पर अनेक पुरस्कार एवं सम्मान, जिनमें से प्रमुख उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया गया शिक्षक श्री सम्मान जो 2019 आपको प्राप्त। आपको प्रोफेसर HR मिश्रा नेहरा गोल्ड मेडल अवार्ड, रिकॉग्निशन गोल्ड मेडल अवार्ड, इलाहाबाद बोर्ड, ऐसे कई अवार्ड नवाजा गया है। आपको विभिन्न संस्थानों ने सम्मान से नवाजा है। इनके प्रमुख SSS, SZSI, STS और SSC। आप विभिन्न देशों में अपने शोध कार्य संपादित हुए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हंगरी, नीदरलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एवं USA। आपने विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों में सैकड़ों वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, आपका स्वागत है। आप अपने बहुमूल्य शब्दों से हम सबको करें। आदरणीय Sir, you are not audible, sir. Hello. You are audible, sir. Your Okay, voice. okay, thank you very much. Thank you, Swapnil, for speaking very, very kind words to me at the outset. The participants, my elder brother, Dr. Ashok Saxena ji, Bhabhi ji, Vijay Lakshmi ji, इसका कानपुर चैप्टर के ट्रेजरर इसके श्रीवास्तव जी, DAV कॉलेज कानपुर के प्राचार्य A.K. दीक्षित जी और ऑर्गेनाइजर स्वप्निल राज दुबे जी, और इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग कर रहे दूर दराज के बहुत सारे प्रतिभागी, प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया के लोग। सबसे पहले मैं आयोजक मंडल का आभारी हूं जिन्होंने मुझे आपको साइंस डे के अवसर पर नगेंद्र स्वरूप जी मेमोरियल लेक्चर के लिए आमंत्रित किया। देखिए, मैं विज्ञान का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ और एक बहुत छोटे से विषय पर काम करता हूँ। मेरे लिए बहुत ज्यादा बोल पाना संभव नहीं है, और फिर भी मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों ने 3 साल की गुलामी के बाद 1947 में आजादी पाई है, और इस आजादी के बाद, इस आजादी के साथ साथ हमको बहुत सारी समस्याएं भी मिली थी। लूटी हुई अर्थव्यवस्था, धर्म के नाम पर बटा हुआ देश, और बीमारी से ग्रस्त पब्लिक और मिजरेबल सिटीजन। इस सारी सिचुएशंस को हमारी करीब करीब 3 पीढ़ियों ने व्यक्तिगत रूप से देखा है। पहली पीढ़ी वो जो जंग आजादी में सीधा प्रतिभाग कर रही थी, दूसरी पीढ़ी मेरी और अशोक सक्सेना जी वाली जिन्होंने अपने बुजुर्गों से आजादी की कहानियां सुनी, और तीसरी पीढ़ी आपकी बच्चों जो
आजादी के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस आजादी के पश्चात हमारे देश ने करीब पिछले 70 सालों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही नहीं, तमाम विषयों पे बहुत सारे काम किए हैं, जिसके बारे में विजयलक्ष्मी जी और दीक्षित जी ने बहुत विस्तार से बताया हुआ है। हमारे रहनुमाओं ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से बहुत अथक प्रयास किया है। इसका परिणाम था 1960 में हरित क्रांति। मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। मैं 1958 का पैदा हुआ हूं। उस वक्त बहुत सारे टेक्नोलॉजी के औजार नहीं थे और गेहूं की, धान की जो मड़ाई होती थी वो जानवरों द्वारा की जाती थी। बहुत सारे जानवर एक साथ बांध दिए जाते थे और उस पर वो चलते रहते थे और गेहूं नीचे निकलता रहता था। इस दौरान जानवर कुछ खा भी लेता था। मैं देखता था कि जो मजदूर उस जानवर को चलाने के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे, वो उनके द्वारा किया गया गोबर इकट्ठा करते रहते थे और एक किनारे रखते रहते थे। मैंने एक बार जिज्ञासावश अपने पिताजी से पूछा कि इसका क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको ये अपने घर ले जाएगा और इस गोबर के साथ जो गेहूं के दाने आए होंगे उनको धुलेगा, उसको पीसा जाएगा और उसकी रोटी बनेगी और इसका परिवार खाएगा। मैंने वो वक्त देखा है, आप लोग नहीं जानते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में जो हरित क्रांति की है, उसके परिणाम स्वरूप आज भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया को अपने कृषि की पैदावार एक्सपोर्ट करता है। तत्पश्चात हमारे वैज्ञानिकों ने 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला और दुग्ध के क्षेत्र में करीब करीब भारत आत्मनिर्भर है। हालांकि कुछ बाहर से भी मंगाना पड़ता है। 1980 के दशक में जब भारत को ये लगने लगा कि करीब करीब धरती का 3/4 हिस्सा पानी है और इस एक्सपोनेंशियल, इस ज्यामितीय रूप से बढ़ती हुई आबादी को समुचित और बैलेंस प्रोटीन खिलाना एक आवश्यक है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा था। देखिए, टेक्नोलॉजी का कोई भी क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का काम किसी भी वस्तु में वैल्यू ऐड करना है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं। देखिए, लोहे की छड़ बाजार में मिलती है। मैं नहीं जानता उसकी वास्तविक कीमत क्या है, परंतु अगर मान लीजिए कि 400 रुपए किलो में वो मिलता है बाजार में, उसे लाके लोहार, जिसके पास टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ हथौड़ी है, भट्ठी है और निहाई है, उससे जो कील बनाता है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए उस लोहे की छड़ में जो वैल्यू ऐड करता है, इसका प्रतिफल उसको बाजार में बेचकर 800 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। मतलब 400 रुपए की वैल्यू उसने अपनी तकनीक से उसमें जोड़ी। आपने देखा होगा बहुत सारी कानपुर में फोरेजिंग इंडस्ट्री है, मैं जानता हूं, और वही छड़ जो 400 रुपए की खरीदी जाती है, जब फोरेजिंग इंडस्ट्री के जरिए उसकी कील बनती है, तो उनकी टेक्नोलॉजी के जरिए जो वैल्यू उसमें जुड़ती है, जिसका प्रतिफल उसको बाजार में बेचकर 1600 रुपए किलो में बेचता है। इसी प्रकार टाटा, जिसके पास टेक्नोलॉजी का अंबार है, वही उस छड़ को जब बेचना शुरू करता है अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, तो उसकी कीमत बाजार में 4000 रुपए की होती है। ये टेक्नोलॉजी की विशेषता है। उसने उस लोहे की छड़ में जितनी वैल्यू ऐड की, जिसके प्रतिफल स्वरूप उसका दाम बढ़ता है। मैं बात कर रहा था मछली की उस पालन के बारे में। I may please be allowed to share the screen, please, Swapnil? Yes, I am making you host. Now you can share, sir. Okay. Is it visible? Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. I work on a small group of pathogens which used to infect the fishes. They are called monogenes.
I have spent about 40 years together on this problem. This group constitutes an extensive group of mostly ectoparasites of aquatic and amphibious vertebrates and occupy a special place among the parasite fauna of freshwater fishes. This monogenia, the name monogenia is given to it because it used to complete its life cycle in just one host, that is a fish from which the egg comes out, and this egg, once it hatches, it results into formation of a larva which is known as Onchomycetidia larva, and that used to infect the fishes. मैं जानता हूं आप बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे. मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं दलाई लामा जी की एक बात मुझे बहुत पसंद है. He says that when you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new, which you have not seen, which you have not practiced, which you have not learned so far. I was talking about monogenia. Monogenians are ubiquitous, less understood parasites in context of aquaculture practices. They generate a potentially stressful environment to the cultured fishes with the possible suppression of immune system, as a result of which fish becomes more susceptible to variety of other infections. In most of the cases, this pathogen, this is the monogenia, just I have made a diagram. This parasite, it causes dual type of injury to their host. With the help of these hooks, if you look at the posterior part of their body, which is said to be the organ of attachment, they injure the host tissue at the site of attachment, break its continuity, and causes localized hemorrhages. Besides this, they open a floodgate for the entry of other pathogens like virus, like bacteria, like fungus, etc., to the fish host. At the same time, they used to feed upon the blood and cells of the ruptured tissues. As far as the clinical symptoms which are exhibited by the host due to the infection of these monogenians, the infected fishes shows pale gill with extensive mucus secretion, enhanced respiratory rate, loss of appetite, hemorrhages, not only from the gills, but also from the skin of the fishes, which due to secondary infections often lead to the mortality of the fishes. As far as their distribution is concerned, mostly about 98% of the monogenians are reported from fishes, and hardly 2% are reported from other amphibious vertebrates that used to live in the water for a variety of reasons. In most of the cases, they used to infect the gill and skin, and recently some of them has been reported as endoparasites, which are reported from the uterus, eye, urinary bladder, etc. Oculotrima hippopotami, look here. This parasite, this has been reported from the internal mucus lining of the hippopotamus. And not only this, they used to observe very strict degree of host specificity, and they also exhibit histotrophism. I mean, anything? Any question? Anyway, they exhibit fair histotrophism. I mean, if they are destined to infect gills, they are going to infect only gills. And if they are destined to infect the skin and fins, they are going to only gills and fins. Look here, these are the monogenians which are infecting the gills, and these are monogenians which are infecting the skins and gill filaments of the fishes. Just a brief introduction of this body plan of the monogenians. The external most covering of the body of monogenian is called as tegument, and outermost layer is of syncytial epithelium cells, in which, see here, nuclei are found distributed without any cell boundaries, and the cell bodies, they are found deeply sunken into the parenchyma. From the external surface, there are large number of microvilli, which are responsible for absorbing food, oxygen, etc. from the surrounding environment, that is water. And in between these, there are muscular layer. There are 3 different types of muscles,
circular, oblique, and longitudinal. As far as their digestive system is concerned, they exhibit the basic body plan. I mean, it starts from mouth, leads to the pharynx, and followed by the intestine. There is no anus in this group of parasites. Food of these monogenians also varies. In fact, on the basis of a taxonomic evaluation, they are classified into two groups, monopisthocotylians and polyopisthocotylians. Monopisthocotylians used to feed on the epidermal tissues and mucoid secretions of the piscine host, whereas polyopisthocotylians are exclusively blood feeders, and they initially make a wound, cut the body of fish, and the blood which starts oozing out of that wound, they used to consume that. As far as their intestinal organization is concerned, many a times it is in the form of a straight blind ending tube. But sometimes the posterior most part of this blind ending tube is forked and terminates blindly. And sometimes the intestinal crura right from the pharynx is found bifurcated and extends up to the posterior region of the body and terminates blindly. In this case also, but sometimes it is seen that although it is forked, there are two intestinal limbs, but they used to unite posteriorly, and in such cases, this intestine is said to be cycloceles. See here, they are highly branched intestinal ceca, which are disseminated in different parts of the body. These two groups of monogenians, they not only differ in the anatomy of their alimentary canal, but they do differ in the food and their digestive system as well. The internal lining, like us, we have got the mucous epithelial lining. They also have the epithelial lining, which is collectively known as gastrodermis. And this gastrodermis is made up of continuous specialized epithelial cells, which are known as cecal cells, which are reported from monopisthocotylians. The other group, which is not continuous like this monopisthocotylians, but between them there are certain blood feeders. They are supposed to digest the blood. The cells which are responsible for digesting the blood, they are called as hematocytes. As far as their digestive physiology is concerned, there are two different phases of the digestion. Extracorporeal digestion, I mean the digestion that takes place outside the alimentary canal, and intracorporeal digestion, that digestion that takes place inside the alimentary canal. This intracorporeal, I mean the digestion that is taking place inside the alimentary canal, is also divided into two phases. Extracellular digestion that takes place inside the lumen of the alimentary canal, and intracellular digestion, which is after absorption. These gastrodermal cells, as cecal cells in case of monopisthocotylians, and hematin cells as seen in case of polyopisthocotylians, they absorb these undigested food remains from the intestinal lumen, and inside these cells they used to digest it, break into the simpler molecules, and they are used. Let me come through it briefly. These are, let me tell you, my dear friends, when in 1980 the Blue Revolution started, Government of India has decided to increase the fish productions. Our farmers, we Indians, we started growing these fishes with very high stocking density. This stocking density not only have led to the fish production increased, but it has also led to the increase in variety of fish diseases, because in high stocking density and their growth in a confined water bodies, that became responsible for the outbreak of disease. And you know, if there is any disease, we have to find out the solution, and we have to first of all find out the culprit which is responsible for the parasites, for the diseases. When I started my career in the Lucknow University in
1979 as a research scholar, I was assigned a task to work on the taxonomy of these small ectoparasites which are present on the skin and gills of the fishes. And I used to use simple microscope to understand the anatomical peculiarities of these groups, on the basis of which I used to identify these parasites to the sites. As far as the helminth, the group to which these monogeneans belong, there are two schools in India which started to work upon initially. Am I audible? Sir, you are audible. Soumya Shukla, please turn off your microphone, and Shivam Kausal. Indian diaspora, which was residing abroad, especially Professor G.S. Thapar, who founded the School of Helminthology in the University of Lucknow, and Professor S.N. Singh, who was trained in some British university. He started the School of Helminthology at Hyderabad. These two schools of helminthology started working on these culprits. Now, I'm just naming them culprit. Say, for example, if you want to identify a disease and if you want to eradicate that disease, you have to first find out and diagnose the particular pathogen. Say, for example, if you want to nab Osama bin Laden, you have to understand that don't convey this message because somebody will come to gun me down. They are wearing a turban and a very long white choga. तब आप उसको पहचान पाओगे और तभी ओसामा बिन लादेन को पुलिस अरेस्ट कर पाएगी. The same story is here with these pathogens. Unless we identify the pathogen accurately, we won't be able to eradicate that. So initially, when the taxonomy began in India, after the contribution of these two schools, we used to work with the help of simple microscopy. See here, these are some of the diagrams which I used to make with the help of these simple microscopes. Subsequently, this passed away and I joined here as lecturer in Chaudhary Charan Singh University, Meerut. And after some time, I found that this taxonomy tool creates confusion in the science of taxonomy of these groups. And I started using electron microscope subsequently. And I worked on the electron microscope and morphology of this group for a couple of years. And after that, I found that on the basis of that, in 1991, Government of India itself designated me as one of the expertise available in the field of monogynia in India. Subsequently, see here, this is my name. At that time, the University of Chaudhary Charan Singh was known as Meerut University. Now, subsequently, I found that this also creates some problem, and I started looking for some other taxonomic tools to identify my pathogens. And I started working on cytotaxonomy, and I started working on the chromosomes. Although for this chromosome, for study, in case of monogynia, while trying to standardize my technique, I used to take out the ovaries of these helminths. They are small. With the help of microscopic needles, I used to take out their ovary. I used to arrest them in metaphase stage using colchicine, but I didn't get any success. Although I standardized the same technique on other group of helminths, say for example these nematodes. See here, these are the chromosomes. These are the chromosomes, and with the help of these chromosomes, I used to make the ideograms, and I used to perform the karyomorphometry, and subsequently I used to identify them on the basis of various parameters suggested by workers of this field. And yeah, I used to identify these pathogens in this form, like in the form of phenogram using karyomorphometric data. I found that this state of art is also insufficient, and it was also not giving me very good results, and I still kept on contributing confusions with the science of taxonomy of this special group. Subsequently, I started using biochemical systematics, and I used to perform electrophoretic
separations of the somatic proteins of these groups, and I used to perform SDS-PAG and used to prepare the zymograms, the enzymes present in the muscles, and this is silver stain. And with the help of that, I used to prepare 0-1 data matrix, and subsequently I used to perform the same experiment as I did with the case of chromosomes. The data used to give me, and see here, I myself resolved these confusions. These are in fact same species, Bifurcoheptor indicus and Bifurcoheptor semgati, which was of course reported from Kanpur by Professor Jan. So this tool helped me a lot, but this also created some problem in the taxonomy of this, because say for example, I'm talking about one species that has been reported from Kashmir, another reported from Calcutta, another reported from Hyderabad, and for that we need to have large collection of these parasites. And by that time I used to succeed in collecting this parasite and keeping in the refrigerator. The protein present in these body of these parasites used to suffer from the freeze fracture. So I started looking for some other technique, and finally at the age of 56 years, I started learning the molecular biology. Initially, you might have read the books of Professor P.K. Gupta. He taught me for about 15 days the molecular biology. Should I stop? Should I stop? क्या सर अपना माइक्रोफोन बंद कर लें? Then I started working on the molecular biology. With the help of PCR, I used to amplify the DNA fragments of my parasites and used to perform these categorization with the same tool which I used to use for the karyomorphometric data. I think some microphones are no problem. With the help of this identification, let me tell you, gentlemen, this part of globe, I mean Oriental region, that acted as a cradle of evolution for fishes. And it is believed that freshwater fishes came into being for the first time in India, and they propagated in different parts of the globe. And due to this region, the monogenean fauna which is present here, they are very much responsible for this region, not only for this region, for the other regions are also to which places these fishes migrate. This is one aspect of monogeny, a parasite. Parasites, you friends, you must be knowing that these parasites are really the dangerous thing, and they used to create problem in the health of the host to which they used to infect. But let me honestly admit that these parasites are not always dangerous, because recently we have witnessed the episode of COVID-19. Our immune system, due to these pathogens, due to unhygienic conditions in which we Indians used to reside, our immune system is already booted up, and we are saved in a way. Besides this, let me tell you that, you know, the ultimate source of energy on the earth is sun, from which energy comes in the form of photons, and they are translated by the green plants into carbohydrates, and these carbohydrates are supplied as source of energy to all animal. All right. I want to say that to convert this solar energy into another form of energy, that is chemical energy, only plants are there. With the help of carbon dioxide, with the help of water, with the help of sunlight, this energy is converted. These parasites, some of my friends, especially Indian friends, the Indian diaspora, which are working abroad with the FDA, they are trying to identify those genes in the parasites, and they have found that there are two well-defined enzyme systems in these parasites: phosphoenol pyruvate carboxykinase system
and mallate dehydrogenase system, with the help of which these parasites, they are capable of utilizing carbon dioxide and converting into the energy. These are not too far. मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये जीन आइडेंटिफाई की जाएंगी और एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के और तमाम क्रोमोसोम्स पे इनको डाला जाएगा, with the help of which we will also be successful in converting this carbon dioxide into our energy budgets. So with these words, मुझे ये जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, मेरी वाली पीढ़ी है, अशोक सक्सेना जी, दीक्षित जी, इस पीढ़ी से नहीं, पर वो पीढ़ी जो सुन रही है, छोटे बच्चे की, मैं उन्हें अगर जगा सका विज्ञान पढ़ने के लिए और विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं अपनी बात आशुतोष राणा की कविता से खत्म करूंगा। हे भारत के राम को, मैं तुम्हें जगाने आया, 100 धर्मों का धर्म बलिदान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने Sir, please stop sharing screen, sir. Thank you, sir. Thank you very much. May I leave now? Swapnil? Right? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने परजीवी विज्ञान पैरासिटोलॉजी पर विशेष एंड विस्तृत चर्चा करी, जिसकी अमिट छाप हमारे मस्तिष्क पर हमेशा बनी रहेगी। अब मैं अपने प्यारे बच्चों से कुछ विशेष संदेश कहना चाहता हूं, जो कि पूरे भारत देश से जुड़े हुए हैं। मुझे जानकर ये हर्ष हो रहा है और मैं आप सबको बता दूं कि इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए हमारे पूरे भारत देश के विभिन्न कोनों से छात्र छात्राएं, प्रोफेसर्स, शोधार्थी और वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। विषय वस्तु को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ नामचीन भारतीय वैज्ञानिकों का नाम लेना चाहूंगा, जो कि आज की कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। सर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर लालजी सिंह, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र, सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस रामचंद्रन, उनके साथ एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे भारत के गौरव हैं। इसी गौरव के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डीएवी कॉलेज कानपुर की एक सदी की यात्रा को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। संस्थान की पहचान, हमारे संस्थान की पहचान गुणवत्तापरक शिक्षा के केंद्र के रूप में हो रही है। साथ ही 100 वर्षों की अवधि में यह बड़े लक्ष्यों और बड़े संकल्पों को साधने और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए एक शक्तिपुंज की तरह रहा है। यहाँ से निकले कई विद्यार्थियों ने देश की उन्नति और समाज की बेहतरी के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। महाविद्यालय ने ज्ञान, संस्कार व सेवा भाव की परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया है। अखंड भारत में आर्य समाज की पताका को फहराते हुए
11 जुलाई 1919 को कानपुर में स्वामी हंसराज जी ने डीएवी महाविद्यालय की नींव रखी थी। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत ज्ञान, विज्ञान, सत्य, अहिंसा, सबके प्रति आदर एवं सहिष्णुता ही हमारा परम उद्देश्य है। हमारे कॉलेज के गौरवशाली इतिहास और गौरवमयी परंपरा को बताने के लिए कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। लड़कपन में जिन उम्मीदों की हुई थी इब्तिदा, लड़कपन में जिन उम्मीदों की हुई थी इब्तिदा, आज उनके इम्तिहान का मजारा देखने को है, आज उनके इम्तिहान का मजारा देखने को है। डीएवी परिवार से संबंधित कुछ प्रमुख हस्तियों का नाम लेना यहाँ अति आवश्यक है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीयुत श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मशहूर कवि गोपाल दास नीरज जी यहीं के छात्र रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, शालिग्राम शुक्ल, शिव वर्मा जैसे स्वाधीनता सेनानियों का संबंध हमारे परिवार से है। CSIR के पहले महानिदेशक श्री आत्माराम जी जैसे कुछ नामचीन छात्रों का महाविद्यालय से संबंध रहा है, वो हमारे छात्र रहे हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सर सीवी रमन जी, जिसके विशेष उपलब्धि पर आज ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3 दिन हमारे महाविद्यालय में प्रवास किया उन्होंने और भौतिक विज्ञान की गौरव को, उनकी स्मृतियों को बढ़ाया है। अब हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम पायदान की ओर अग्रसर हो रहा है और मन में एक बात आ रही है, चलो दुनिया बदलते हैं, चलो दुनिया बदलते हैं, चलो दुनिया बदलते हैं, चलो दुनिया बदलते हैं, है छोटी सी यह जिंदगी, कुछ बड़ा काम करते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं। अब मैं परम आदरणीय डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कानपुर चैप्टर के ट्रेजरर, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस CSJM यूनिवर्सिटी और हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक हैं, धन्यवाद ज्ञाप के लिए सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय सर। Honorable Chief Guest, Dr. H.S. Singh, Vice Chancellor, Shakumbri University, Saharanpur, President of the session, Mrs. Kumkum Saruji, Council Member ISKA, Dr. Vijay Lakshmi Saxena, General President, Indian Science Congress Association, Principal DV College, Dr. Arun Kumar Dikshit ji, Dr. Ashok Saxena, Convener, ISKA Kanpur Chapter, Program Coordinator, Dr. Sapnil Raj Dubey, Galaxy of professors, researchers, ladies and gentlemen, and dear students. It is a matter of pride for me that on behalf of DAV College and ISKA Kanpur chapter, I have been accorded the opportunity to stand before this august gathering of scientists and researchers to extend the vote of thanks. I take this opportunity to remember Swargi Dr. Narang Sarup ji on this occasion, on whose name this lecture series has been promulgated. He was a man of vision, an epitome of academic excellence. His contribution in education domain will always be remembered in history and will inspire the generations altogether. We are fortunate to have Mrs. Kumkum Sarup with us, whose presence is enough to infuse confidence in us. Her reassuring smile, affectionate word have soothing effect on the atmosphere all around. She is always with us in our tough time. Kindly accept our sincere thanks. I am delighted to express my profound thanks to Dr. H.S. Singh, Vice Chancellor, Saharanpur University, for great moral support and giving us valuable time to make this event successful. His dynamic presence is always motivating for us. His vision and academic acumen is very much evident in the form of activities in Saharanpur University. I thank him
for his enlightening and interesting lecture on the topic. I am thankful to Dr. Vijay Lakshmi Saxena for a sincere or untiring effort for the cause of ISKA. She has always extended her helping hand when we need her. I am grateful to express my deepest thanks to Dr. Arun Kumar Dikshit ji, Principal DAV College, Kanpur, for guiding us and providing perfect environment, which has been real motivation for all of us. I am also thankful to Dr. Ashok Saxena, Convener ISKA Kanpur chapter, for his stewardship, support, vision, and commitment. My thanks are due to Dr. Swapnil Raj Dubey, coordinator of this lecture series, and Dr. Surendra Pratap Singh for working very hard and taking a lot of pain to make this event successful. I am thankful to all distinguished invitees present here, accepting our invitation, and all good hearts who work behind the screen. I owe special gratitude to all who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. I thank the media person for covering the event. Once again, I thank you all for your attention. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस सफलतम राष्ट्रीय वेबिनार का समापन हम अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना के साथ करेंगे। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर राष्ट्रभाव समर्पित करें। सर राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। अब इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा होती है। आप सभी का